फ्रेंड्स, आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल स्वागत। आज आम डिस्कस करवा 2023 मसीह होइथिबा OSSTET एग्जाम रो पेडागोजी क्वेश्चंस। चैनल जदि प्रथम थर पई देखछन्ती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। पेडागोजी हमरो 50 मार्क्स रो आसुछि। 50 मार्क्स जदि आमे भलो भाबरे देखिबा ताले हमरो क्वालिफाई करबा निश्चित। चलन्तु स्टार्ट करबा। आज रो प्रश्न कोन रहिछि। Who developed the interaction analysis category system in education for increasing the teaching effectiveness? Need A. Flander, Rayon, Hamilton and Simon, Obron and Nimkov। यार सठिक आंसर है ऑप्शन ए, नीड ए फ्लैंडर। ब्लैकबोर्ड इज ए व्हिच टाइप ऑफ टीचिंग एड्स। ब्लैकबोर्ड गोटे क्यों प्रकार टीचिंग एड्स। ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, नन ऑफ द अबव। यार सठिक आंसर है ऑप्शन बी, ब्लैकबोर्ड गोटे विजुअल एड्स। विजुअल एड्स आउ कौन सब अच्छी मैप आपण मान रहीगला मैप ता सहित ब्लैकबोर्ड बुक। सेक्शन 21 of the Right to Education Act deals with which of the following? Section 21 Right to Education Act क्यों कहा सहित रिलेट अच्छी? कॉर्पोरल पनिशमेंट, टीचर्स क्वालिफिकेशन, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन सी, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी बा SMC। Which is the correct sequence of the evaluation? Evaluation रो correct sequence कौन? Determine what is to be evaluated, conclusion, selection of technique, collection of information। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन ए, फर्स्ट आमे डिटरमाइन व्हाट इज टू बी इभालुएटेड फर्स्ट डिटरमाइन करबा, देन सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स को सिलेक्ट करबा, देन रही आपण मानकर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करबा, देन रही कंक्लूजन। ऑप्शन ए हम ठीक। Educational management has not been drawn from which of the following discipline? Economics, sociology, political science, chemistry। Option D, chemistry। Which of the following is the first aspect of educational management? Educational management रो first aspect कौन? Organization, डायरेक्शन, प्लानिंग, इभालुएशन। ऑप्शन सी, प्लानिंग। प्लानिंग होची एजुकेशनल मैनेजमेंट रो फर्स्ट एस्पेक्ट। व्हिच वन इज एन ऑथोरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग? ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग कोउटी? टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड, लर्निंग सेंटर्ड। ऑप्शन ए, टीचर सेंटर्ड गोटे ऑथोरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग। Which statement is not correct about TLMS? It provides clarity of subject matter। यह ठीक रही। Helps in developing interest। यह भी ठीक रही। डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंटेंट ठीक रही। तो यार आंसर हो ऑप्शन डी, क्योंटी करेक्ट नुह, नन ऑफ द अबव समस्त रही करेक्ट। तो आमर ऑप्शन डी हो गला आंसर।
As per the Right to Education Act, which of the following committee is very crucial in actualizing the goals? Village level committee, school management committee, parent teacher association, mother teacher association. Option B, school management committee. Dash percent of total members shall constitute quorum for the parent teacher association meeting. Parent teacher association meeting रे केते परसेंट मेंबर्स थांती? ऑप्शन ए 40%. Carroll 1965 defined educational psychology as it is the science that studies student behavior in educational settings. The study of school learning in all its aspects, a scientific study of the life stages in the development of an individual, an applied discipline which combines the two different fields of educational and psychology. एहार सठिक आंसर हम ऑप्शन बी द स्टडी ऑफ स्कूल लर्निंग इन ऑल इट्स एस्पेक्ट. On the study of child development, who wrote growth carries a more dynamic connotation which organically ties the present with the past and directs it towards the future. Option A Arnold Gesell. यह आपण माने घसिकी मन रखिबे. चैनल जदि प्रथम थर पर देखुं चैनल को सब्सक्राइब कर रखु एवं सांगसाथी भाई भौणी मान सहित शेयर मध्य कर दियंतु. लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स. यार आंसरटा आपण माने जानि थिबे स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स. When infants think by means of their senses and motor acting is the stage of motor acting को स्टेज रे करि थाए. सेंसरी मोटर पीरियड, प्री ऑपरेशनल पीरियड, कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड, फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड. ऑप्शन ए सेंसरी मोटर पीरियड. Which of the following is not a conditions of learning? निम्नोक्त केउटी कंडीशन लर्निंग रो कंडीशन नुहे. मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, फीडबैक, एब्स्ट्रैक्शन. ऑप्शन डी. हु डेवलप्ड ए लर्निंग थ्योरी कनेक्शनिज्म. किए लर्निंग थ्योरी कनेक्शनिज्म डेवलप्ड करथिले? एडवर्ड थर्नडाइक, इवान पावलोव, जॉन वाटसन, वोल्फगांग कोहलर. ऑप्शन ए एडवर्ड थर्नडाइक कनेक्शनिज्म लर्निंग को डेवलप्ड करथिले. तांकर आउ गोटे थ्योरी मध्ये रहिछि ट्रायल एंड एरर थ्योरी. Which type of evaluation is used at the end of the course to determine students mastery on the course? केउ इवालुएशन टी आपण मानकर कोर्स रो शेष रे करा जाय जोटा कि आपण मानकर डिटरमाइन करे स्टूडेंट्स रो मास्टरी उपरे. यार सटीक आंसर हो समाटिव. गोटे कोर्स रो शेष रे आमे समाटिव असेसमेंट करि थाउ बा इवालुएशन करि थाउ. What is the meaning of comprehensive evaluation? It refers to the scholastic aspect. It refers to scholastic aspect. It refers to both scholastic and co-scholastic aspect
It refers to continuous process. एहार आंसर हम ऑप्शन सी. Comprehensive evaluation refers to both scholastic and co-scholastic aspects. Law of readiness of learning refers to law of readiness आपण माने जानिथिबे ready to learn. एहार आंसर हम ऑप्शन सी. Learning of a child grows with the increase of age. Which condition of learning refers to it? गोटे छुआर ग्रोथ सहित लर्निंग मध्य इनक्रीज करिथाय ताहाको हमर माने कोन कहंती. ऑप्शन बी मैच्योरेशन सहित आपण मानकर लर्निंग मध्य ग्रो करे. Which concept was introduced in the progressive school of Britain? केउ कॉन्सेप्ट टी आपण मानकर प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ ब्रिटेन रो इंट्रोड्यूस्ड होइथिला. स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. ऑप्शन ए स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन. Which statement is not correct about learning? केउ स्टेटमेंट टी भूल रहिछि लर्निंग विषय रे भूल रहिछि. It is modification of behavior. यह ठीक अच्छी. Outcomes of it provide experience. ठीक रही. It is reflex. यह भूल रही. It is affects general behavior pattern. यह ठीक रही. तो आपण मानकर आंसर रे जिवो ऑप्शन सी. It is reflex. Institution have its own लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स इज नॉन एज. गोटे इंस्टीट्यूशन रो लॉन्ग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान्स को कौन कहा जाए? एकेडमिक प्लानिंग, करिकुलर प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग. ऑप्शन डी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग. गोटे इंस्टीट्यूट रो शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म प्लानिंग को आमे इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग कहि थाउ. Which of the following is not a pillar of management principle of Frederick Taylor? Success in the given work, relationship between time and salary, respectable behavior, difficulty level of the given work. Option D difficulty level of the given work. Emotional response to symbolic stimuli is primarily the result of maturation, learning, adjustment, increased sensory perception. Option B learning. Emotional response to symbolic stimuli is primarily the result of learning. Which of the following is not a factor for affective retention? निम्नोक्त केउटी affective retention ର factor नुहे? Interference, reorganization, elapsed time, all of these. Option D all of these. The process of taking new information into our already existing knowledge is known as. आमर नुआ ज्ञान सहित पूर्व ज्ञानर संपर्क को कौन कहा जाए? एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, आडाप्टेशन, इक्विलिब्रियम. ऑप्शन बी एसिमिलेशन. पूर्व ज्ञान और नूतन ज्ञानर मिश्रण एसिमिलेशन. Which is known for his सोशियोकल्चरल थ्योरी? सोशियोकल्चरल थ्योरी किए देइथिले? एटा आपण माने समस्त ठीक करथिबे. ऑप्शन सी लिव वाइगोट्स्की सोशियोकल्चरल थ्योरी देइथिले. पियागेट आपण मानकर कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. Which of the following statement is not correct for school development plan? It is made by the concerned government. It is made by the school at local level. It is made for the development of school infrastructure. It is made with the consultation of local community. निम्नोक्त मध्यरु केउ स्टेटमेंट टी भूल रही
ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ର। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ କନସର୍ଣ୍ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। Of all the different factors which influence the quality of education and its contribution to national development, the quality, competence, and characters of teachers are doubtedly the most significant. Who said it? ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? Secondary Education Commission, Education Commission 1964-65, National Education Policy 1986, National Education Policy 2020। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି। ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ 1964-65। Which validity of a test is established by determining whether the test items adequately sample the skills and subject matter of the course? Face validity, empirical validity, content validity, factorial validity। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି, content validity। A pupil's composite or average educational achievement on a battery of achievement test of school subject is called as his mental age, educational age, chronological age, attainment age। Option B, educational age। Which of the following statement is correct about how are Piaget and Vygotsky similar? निम्नोक्त मध्यरु पियागेट एवं भाइगोट्स्की सिमिलर स्टेटमेंट कोउटी? Both says cultural differences have effect on development. Both suggest development is universal. Both knowledge the role of peer interaction in development. None of the above। Option C, both acknowledge the role of peer interaction in development। ଏହା similar थिला। Zone of proximal development by ZPD is associated with the theory of Lev Vygotsky, Carl Rogers, Jean Piaget, B.F. Skinner। Zone of proximal development କେଉଁ theory ସହିତ associated ଅଛି? Option A, Lev Vygotsky। Stimuli that increases probability of desirable responses of the learners is known as reinforcement, explanation, illustrating with example, stimulus variation। Option A, reinforcement। Who formulated number of postulates which explained the intervening variables essential for learning? Kohler, Skinner, Hull, Tolman। Option C, Hull। Which Thorndike's law is based on the law of use and disuse? କେଉଁ ଲଟି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକଙ୍କ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ୟୁଜ୍ର ବେସ୍ଡରେ? ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍, ଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ଅପସନ୍ ସି, ଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। Which of the following is a factor which assist in the progress of learning? निम्नोक्त मध्यरु केउ फैक्टरटी प्रोग्रेस लर्निंग रो फैक्टर अटे? सिग्निफिकेंस, प्रॉब्लम एटीट्यूड, अटेंटिवनेस, ऑल ऑफ दीज।
Option D, all of these. In which year the Ministry of Education was renamed as Ministry of Human Resource Development? यह प्रश्नटी पूर्वरु मध्य आसीछि। यार आंसर हबो ऑप्शन सी 1985। Which of the following is a principal academic advisor to the Ministry of Education in matter relating to school education? Central Advisory Board on Education by CABE, National Council of Educational Research and Training NCERT, University Grant Commission by UGC, National University for Education Planning and Administration by NUPA। यार आंसर हबो ऑप्शन बी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग by NCERT। One who has learned to drive a Maruti car drives ambassador with little difficulty. The phenomenon illustrated is called relearning, overlearning, automatic learning, transfer of learning. Option D, transfer of learning. Positive transfer of training is most possible with similar tasks, dissimilar tasks, verbal and motor tasks, none of the above. Option A, similar tasks. Which of the following theories is related to learning by consequences? Operant conditioning, insight learning, classical conditioning, cognitive learning. यार आंसर हबो ऑप्शन ए ऑपरेंट कंडीशनिंग। द टर्म स्कीमा डिस्क्राइब स्कीमा टर्मटी काहाकू डिस्क्राइब करे? मेंटल एंड फिजिकल एक्शन, सोशल एक्शंस, इमोशनल एक्शंस, नन ऑफ द एबव। ऑप्शन ए स्कीमा आमर मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस को डिस्क्राइब करे। Effective teaching by and large is a function of teachers' incentive, teachers' honesty, teaching makes students learn and understand, teachers linking or job of teaching। यार सटीक आंसर हबो ऑप्शन सी टीचिंग मेक्स स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड। ताहा हमर इफेक्टिव टीचिंग। Absenteeism in the class can be minimized by punishing student, teaching the student effectively and sincerely, ignoring the fact of absenteeism, none of the above। यार सटीक आंसर हबो ऑप्शन बी टीचिंग द स्टूडेंट इफेक्टिवली एंड सिंसियरली। स्टूडेंट मानकू आमे इफेक्टिवली एवं सिंसियरली पढ़ेइबा। Which type of educational management is more important than others in the following? निम्नोक्त मध्यरु केउटी एजुकेशनल मैनेजमेंट ठारू अलगा अछि? ऑथोरिटेरियन, इंटरनल एजुकेशनल मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज एजुकेशनल मैनेजमेंट, एक्सटर्नल एजुकेशनल। यार सटीक आंसर हबो ऑप्शन बी इंटरनल एजुकेशनल मैनेजमेंट। Which of the following is a I style of educational management? Autocratic, democratic, decentralized, creative। यार आंसर हबो ऑप्शन ए ऑटोक्रेटिक। प्रत्येक वर्ष ऑटोक्रेटिक एवं डेमोक्रेटिक रु प्रश्न आसुची, तेणुक आपण मैंने ताहाको भल भाव देखिए एवं चैनल जदि प्रथम थर देखुं चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। थैंक यू।